आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल का एक फेस्टिवल जिसको बोलते हैं रॉलन फेस्टिवल। तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज हम लेते हैं। आई होप बहुत सारे लोगों को पता होगा बिकॉज ये अभी इंटरनेट में बज़ कर रहा है, इंटरनेट में ट्रेंडिंग कर रहा है। आई थिंक आपको इंस्टा पे बहुत सारे, फेसबुक पे इसका पोस्ट मिल जाएगा। तो चलिए इसका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इससे पहले सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। थैंक यू वंस अगेन। नमस्ते, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। जो पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको हमारा लाइव स्ट्रीमिंग कैसा लगा। अगर आप प्री प्ले करके देख रहे हैं या मुझे आप पहले भी जानते हो तो प्लीज़ अपना राय ज़रूर देना, क्योंकि आपका राय से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज़ वो जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपका फीडबैक मैं ज़रूर लेता हूँ और बहुत कुछ इम्प्रूव करता हूँ अपने लाइव स्ट्रीमिंग पे। तो चलिए ये टॉपिक के ऊपर बातें करते हैं। जो ये रॉलन है, हिमाचल का जो ये फेस्टिवल है, इज़ बिलीव टू बी 5000 years old festival from the Kinnaur district of Himachal Pradesh. This makes it older than the most documented religions and civilizations. It has no recorded written history known through oral traditions passed to generation. तो इसका कोई हिस्ट्री ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। इट जस्ट जैसे कि हमारे पूर्वज रहते हैं ना, जैसे हमारे नाना नानी रहते हैं, वो जैसे बात करके ये हमारा ट्रेडिशन है, आपको आगे लेके जाना है, ठीक है। तो वैसे ही एक गांव से दूसरे गांव और उनके जो ट्रेडिशंस है, ऐसे ही उन्होंने एक मतलब पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को उन्होंने ट्रांसफर किया नॉलेज की ट्रेडिशंस होता क्या है। सो दैट्स हाउ देयर, जैसे कि अभी की जनरेशन दे गॉट टू नो एंड दे आर फॉलोइंग इट, बिकॉज इसके पीछे एक बहुत बहुत बढ़िया स्टोरी है। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए कि ये ट्रेडिशंस क्या है। ओके, so, historians admit that Roland predates all modern classification of religion and culture. The festival represents a blend of ancient mountain, folklore, and rituals traditions. No one is certain about the exact origin or founder of the festival. Roland is deeply embedded in the spiritual and culturally memory of local Himalayan communities. It is celebrated every year, usually at the end of winter और अर्ली स्प्रिंग व्हेन द स्नो रिट्रीट्स। ठीक है, तो इसका थोड़ा और डिटेल पे जाते हैं। सो रोलन इज ए रिचुअलिस्टिक डांस फेस्टिवल दैट मार्क्स एट द एंड ऑफ सुस्कर फेस्टिवल इन कोठी एंड काल्पा विलेजेस वेयर पीपल प्रे टू द सोनी, मतलब फेरीज, उनके सोनी मतलब फेरीज होते हैं उनके, ऑफ द लोकल मीडो सिमिलर टू बोगियल इन उत्तराखंड। ओके, इन द अपर हिमालयस काल्पास Roland Festival feels less like a show and more like a secret and interesting one. The internet recently found a few videos and pictures, and no time it became sensation. People being curious on what it is, but let me tell you, Roland is not a staged. It is a living rituals that honors the Sauni fairies who are believed to protect people through winter. This guide walks you through the festival from why it exists to who takes part of it, what you will actually see the Nagin Narayan Temple. Okay, so Raulane is a spring ritual from Kinnaur district in Himachal Pradesh. As it hearts its thank you and farewell, villagers and the local believe that the Sauni mountain fairies or guardian spirits came down from the meadows, which are called Kanda in Kinnaur, to watch people during the cool months. When spring arrives, the community gathers to honor the spirits before they return to the high pastures. Hi guys, namaste, ram ram, radhe radhe, sat sri akal and assalamu alaikum. सो गाइस, ये जो है हिमाचल का जो फेस्टिवल है, इसको बोलते हैं रॉलन फेस्टिवल। तो उसी के ऊपर थोड़ा हम बातें कर रहे हैं। आई होप आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम में बहुत सारी चीज़ें देखा होगा। तो प्लीज़ मेरी बातें सुनिए और जस्ट फॉलो मी कि रॉलन फेस्टिवल क्या है। सो रॉलन इज ए स्प्रिंग रिचुअल इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट in Himachal Pradesh. At its heart, it's a thank you and a farewell. Villagers and the locals believe that the Sauni mountains fairies or guardians spirits come down from the meadows, which are called Kanda in Kinnaur, to watch people during the cold months. The festival is simple but also a little strange to outsiders. Two men dress as a ceremonial pair called the Raula, जो कि groom है, एंड Raulane जो ब्राइड है। मतलब दो लड़के ही एक बनता है, मतलब उसमें रौला जो उनके लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ग्रूम, एंड Raulane जो ब्राइड है, ठीक है। दे डू एक्ट लाइक ए नॉर्मल वेडिंग कपल. देयर रोल इज सिंबलिक. By becoming Raula and Raulane, they represent the link between villagers and the Sauni.
All the villagers take part in some or other way. Okay, so ये कहाँ और कब होता है? Roland takes place at the early spring, soon after Holi. होली के बाद होता है. So when the day starts to warm and people prepare to head back to the fields in 2026. 2026 में ये almost March 7 को होगा after the Holi festival. In Kalpa, the main ritual focuses on the Nagin Narayan, also written as Nara or Narayan variations temples. The festival can last several days, mostly about 5 to 7 days. During that time, the whole place becomes a ritual space of processions, music, and small dramas that carry meaning. The villagers understand well. Okay, the two roles are chosen carefully. Kalpa is divided into parts called sairing. From each sairing, elders select people who will perform. Choice is not casual. Community approvals matters, and in local telling, so do small signs that elders read as blessings from the Saunis. Saunis मतलब फेरी होते हैं, मतलब भगवान को उनको Saunis बोलते हैं वहाँ, ठीक है. सो जो रॉलन का मतलब ग्रूम का आउटफिट क्या होता है? डोरू, किन्नौर शॉल पहनते हैं, एक छोली, कोट लाइक टॉप, ओके, ए पट्टू वेस्ट शॉल रहता है उनका, एंड ए गाची एक बेल्ट पहनते हैं वो. हर हेड वेयर इज फ्लोरल लोकल फ्लावर्स लाइक चमका, व्हाइट कलर का रहता है वो, नरका संग येलो कलर का वो फूल रहता है, और एक एंड कलरफुल कॉटन शीट्स कॉल्ड बकरी कान. द वुमेन ऑफ द सेयरिंग ड्रेस hair and put an ancestral jewelry, which are silver items named daglo, bitri, kontai, and similar pieces passed down through families. These pieces link the ritual to long family histories. सो रौला का आउटफिट क्या होता है? ठीक है, हमने अभी क्या रोलन का आउटफिट, अभी रौला ग्रूम का आउटफिट क्या होता है? थिक किन्नौरी वुल गारमेंट्स, रेड गाची और व्हील दैट कवर्स हिज फेस, फेस कवर रहता है उनका जो ग्रूम का, and the dagger called rakas carried as a protection against evil. His look is more reserved. The veil and the full covering carry symbolic weight. Both cover their faces, wear globes. There are multiple Raulas and Raulans. Okay, so उनका जो फेस्टिवल रहता है, दो लड़के ही रहते हैं, ठीक है, बट उनका एक जो लड़का रहता है वो ग्रूम का आउटफिट पहनता है, और एक जो लड़की मतलब और जो लड़का रहता है वो लड़की की, मतलब ऐसे कंप्लीट लड़की की नहीं है बट ऑलमोस्ट सिमिलर टू लड़की की आउटफिट उनको पहनते हैं. तो जो ग्रूम रहता है उसको बोलते हैं रौला, और जो ब्राइड रहते हैं उसको बोलते हैं रॉलन. ओके, और उनका चेहरा ढका रहता है. और ये जो फेस्टिवल के टाइम में सिर्फ एक नहीं बहुत सारे उनके एक ग्रुप है, उसमें से सिलेक्ट किया जाता है कि कौन इस बार रौला रॉलन बनेंगे. और ये जो फेस्टिवल होता है जस्ट आफ्टर आपका विंटर जब खत्म होता है तभी होता है, एंड ये अभी होगा मार्च 7 को होगा 2026 में. So villagers give two explanations for this ये festival का. One says the fairies should not recognize the humans and carry them away, and another says covering shows humility in the presence of many holy spirits. Either way, the full covering makes the figure feel heavenly. Okay. At the Nagin Narayan Temple, the mood completely changes. The loudness softens and the dance slows. The couple offers prayers and performs a symbolic dance. The movement is slow and careful, the kind of dance that makes you feel you are watching something older than the people performing it. Alongside the main pair, there are other ritual actors are also there. Okay, so Janpundulu, masked figures who perform to ward off evil spirits. Their masks are fierce because they are meant to frighten away harm. These figures appear in other nearby mountains festivals too. Kayang, जो दूसरा जो कैरेक्टर है, a local folk dance in which people form a semicircle linking arms in a garland like pattern. The Raula and Rauland sometimes join or lead such dances as a part of their prayers. Sattu throwing, okay, during the performance they throw sattu, barley flour, okay, at the onlookers, much like the celebration of Holi. So it's similar like Holi, but वहाँ सत्तू फेंकते हैं, मतलब जो खाने का है ना सत्तू, barley flour जो है, ठीक है, तो वो फेंकते हैं उस समय. In some parts of Himachal, Holi is celebrated with flour. Sorry. What the elders say and the story behind it. Local insist Raulane is older than any single storyteller's memory. Some call it 5,000 years old, and that is how strongly people feel the tradition is ancient. The story is told to children are small but deep. Nap under a cedar. Cedar is a tall evergreen conference tree which is durable in winter, and Sauni might tuck an invisible blanket around you. Okay,
Laugh loudly as the roller perform, and you invite luck to the harvest. These are simple ways the culture keeps its history alive. सो वाई रॉलन इज कैचिंग द इंटरनेट्स आई सडनली, तो ये अभी जो रोलान रॉलन और जो हिमाचल का ये जो फेस्टिवल है वो सबका मतलब इतना अभी बज़ में क्यों है और इतना ट्रेंडिंग पे क्यों है? बिकॉज अगर आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में देखोगे तो इसके बहुत सारे वीडियोस एंड फोटोज सर्कुलेट हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? So the masked figures and the turbans, the old silver jewelry and the slow dance, these images travel fast on social media platforms because they offer something different. Major outlets and social posts picked up those visuals and called attention to the festival's authenticity. That sudden interest has brought more visitors and more questions. So it's worth remembering that what makes Roland special is its privacy and meaning within the local life. Roland is more than a visual stunt, it is compact world of meaning, a community thanking invisible protectors, families handling down costume and silver, elders choosing actors who will represent their hopes for a safe year, and villagers joining in both prayer and play. It reminds us that Himalayas are not only one place of views but also a deep relationship between people and unseen mountain world. Whether you love it for the mask and music or respect it as a faith, Roland asks something of simple of anyone who watches: pay attention, stay quiet when needed, and carry the story forward with care. There are multiple festivals in Himalayan region that may seem different or hard to understand. It's the culture of the Himalayas and we also respect the culture. Okay, so ये total story है आपका ये जो रोलन फेस्टिवल के ऊपर है. ओके, सो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा अभी तक. तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और कौन कौन है प्लीज़ बताइए. तो इसका अभी और थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे. अगर आप लोग मेरे साथ बने हुए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कहाँ से आप और क्या करते हैं. थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग. हाय अंतिशा, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, व्हाट्स अप, कैसे हो आप? सो इसका जो माइथोलॉजी और जो बिलीफ है, द फेस्टिवल ऑनर्स द सोनिस, मतलब जो उनका फेरी गॉड है. celestial fairies believed to protect the village during harsh winters. Saunis are considered gentle and radiant presence made of frost and moonlight. They are guardians of the meadows, livestock, and guide lost travelers in fog. Locals see Saunis not as a distant god but as near protective spirits woven into daily life. Roland ceremonies communicate with the Saunis spiritually, thanking them for protection. The festival is a symbolic farewell to these winter fairies as they return to the mountains. The veils and the mask worn help create a sacred space between the human world and the mystic realm. कैसे हो अंतिशा आप? हाउ आर यू? डिनर हो गया आपका? सो इसका रिचुअल एंड सेरेमनी क्या है? द कोर रिचुअल इन्वॉल्व द सिंबॉलिक मैरिज ऑफ टू मैन रिप्रेजेंटिंग रोला, जैसे मैंने बताया आपको, एंड रोलैंड, मतलब दो लड़के. दे जस्ट टेक द गेटअप ऑफ ए ग्रूम एंड ए ब्राइड. ओके, गुड. हाउ आर यू? और कैसा रहा आपका दिन? Yes, mine is also done. Thank you for asking. So Raula and Raulane are chosen from local neighborhood communities by village elders. Both wear heavy, thick woolen robes, handmade shawls, and distinctive masks covering their faces. Roland wears an elaborated floral crown made from sacred local flowers. Their hands and faces are fully covered to erase individual identity. This is critical. Hi guys, human faces would make the ritual ordinary rather than sacred. The couple, मतलब जो लड़के ही हैं, never trust online gurus. Okay, Vincent, bye. Thank you for joining us. Pray. So their hands, faces are fully covered to erase individual identity. The concealment is critical. Human faces would make the ritual ordinary rather than sacred. The couple, जो Rola and Roland, acts as the vessels or messenger between realms during the festival. Okay, they perform slow, deliberate, almost trance-like dances at the Nagin Narayan Temple courtyard. The dance signifies communication with the Saunis and prayer for protection and prosperity. Okay, the festival procession includes masked figures such as Janpundlu, whose role is to ward off evil spirits. Villagers participate by chanting, playing traditional instruments, and accompanying the procession. The Janpundlu wear a frightful mask carved to scare away unseen malevolent spirits.
Children watch the part of the festivals with fascinations, while elders show reverence. The procession to the temple is slow and meditative, embodying ancient ritual rhythms. So इसका cultural significance क्या है? जो Roland embodies community, faith built on cycles of nature, protection, and seasonal harmony. It reflects an ancient worldview where myth and daily life are inseparable. The festival serves as a way to honor unseen protective forces shaping harvest and well-being. So mainly इनका जो ritual है, ये है जो विंटर में जो आपको बहुत सर्दी होता है, राइट, हिमाचल में बहुत सर्दी पड़ता है, राइट, तो उस समय उनको वो चीज़ में बचने के लिए जो उनके जो हिमालय के वो जो स्पिरिट मानते हैं या फेरी या गॉड मानते हैं, उनको जो वो उस समय उनको जो हेल्प करते हैं, उनका जो जाने के समय, राइट, जब आपका विंटर खत्म हो जाता है, टू से देम थैंक यू कि जो गॉड आपने हमें इतना मदद किया विंटर के टाइम में, उनको थैंक यू बोलने के लिए मेनली ये रिचुअल मनाते हैं वो। और ये कहीं रिचुअल आपको कहीं भी स्क्रिप्टेड या कहीं मिलेगा नहीं। सो इट इज़ अ रिचुअल जो कि आपका ट्रेडिशन बाय मतलब आप ये बोल सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर किया गया बाय स्पोकिंग, मतलब स्पीकिंग, कि हमारा ये ट्रेडिशन है, यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड दैट। सो दैट इज हाउ दे हैव कैरीड फॉरवर्ड दिस ट्रेडिशंस। ओके। So the costumes are hand woven from thick Kinnauri wool and ancestral traditions. Floral crowns and Raulane are made from native aromatic plants like chamka and narkasang. Masks are intricately carved wood or crafted coverings that transform the wearer's identity. The color palette is natural, earthy wool browns, reds, floral, floral, whites and greens. The dance is minimalist with no flamboyant moves. Each step is symbolic. Visual includes smoke, chanting, voices, bell ringing, and static slow pace, creating a sacred atmosphere. So इसका geographic and social context क्या है? The festival takes place mainly in Kalpa and surrounding Kinnaur villages, elevation above 2500 meters. The landscape itself, mountains, meadows, temples, forms a natural backdrop integral to the festival's essence. It coincides with the retreat of harsh winter, signaling nature's renewal. The Nagin Narayan Temple is a focal sacred site for the ceremonies. The festival is mostly witnessed by locals, remaining largely closed to the mass tourism. Elders and village council members play key roles in choosing protagonists and preparing preparations. The entire village participates collectively in preserving and sustaining the faith. Community cooperation exemplifies a deeply intertwined social fabric. The festival functions as a social equalizer, everyone contributes regardless of status. Women and children play supporting roles in preparing decorations and accompaniments. The marriage ritual symbolizes balance between masculine and feminine cosmic forces. It also represents the union of human and universal nature, Purush and Prakriti. The cryptic dance is a prayer for safe livestock, good harvest, and communal harmony. Valid and mass dances become divine figures, show transformation beyond individual ego. The festival is the rite of passage for the community through winter's end and Earth's rebirth. Despite roads, mobile networks, and new influences, Roland remains untouched and uncompromised. The festival has gone viral on social media, bringing global attention to this tourist show. Efforts to document and preserve the festival respect the community's wishes for privacy. Roland inspires a broader appreciation of non-written cultural tradition worldwide. It reminds the world about the power of oral history and ritual continuity. Raulane is older than the notion of nation states, borders, or modern India itself. Historically, the mountains themselves are considered storytellers and witnesses. Some believe the festival's root tied to prehistoric fertility and nature worship. The slow dance has no direct translation, but is language older than words. Okay, each element of the costume जो आपका रोलन जो आपका रोलन फेस्टिवल हिमाचल का जो है उनका जो वो जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, राइट, द ईच एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट्यूम टेल्स अ स्टोरी फ्रॉम द लोकल एनवायरनमेंट। द मास्क वर्न, दोनों जो रोला रोलन जो ब्राइड एंड ग्रूम
मास्क पहनते हैं, उनका चेहरा नहीं दिखाई देता, ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल और डांस. सो द मास्क worn might have originated as protective talismans. Local claim Local claim the festival connects physical life to metaphysical dimensions. The festival's timings align with the agriculture cycles and lunar calendars. Roland embodies a unique blend of animism and Himalayan shamanistic practices. Modernizing threatens many traditional festivals, but Roland holds strong through local dedication. Increasing attention may bring more tourists, which needs carefully handling to preserve sanity. Climate change could impact the region's ecology, indirectly affecting festival timing and practices. Young people balancing modern lifestyles with tradition face challenges in passing on Roland. Support from cultural organization could help safeguard the intangible heritage. Roland stands apart from grander, more commercial Himalayan festivals by its intimate scale. It invites comparison with other Himalayan animistic rituals but remains unique in its symbolism. The festival exemplifies how mountain cultures preserve ancient spirituality through ritual isolation. Roland offers valuable lessons on community, harmony, and nature reverence relevantly globally. Its enduring mystery captivates anthropologists, historians and spiritual seekers worldwide. So ये रहा आपका टोटल हिस्ट्री रॉलन फेस्टिवल जो हिमाचल में होता है. इसका जो डिटेल मतलब उनका कपड़ा से लेके उनका जो ब्राइड ग्रूम जो मतलब एज ए प्रोटैगनिस्ट मतलब वो सब एक्टिंग करता है, राइट. एक्चुअल कोई शादी वादी नहीं होता है इसमें. गांव के हर एक इंसान कहीं ना थोड़ा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है और मेनली उनका जो ब्राइड एंड ग्रूम बनता है. और ये जो ब्राइड एंड ग्रूम बनते हैं ये दो लड़के ही बनते हैं जस्ट टू शो के उनका जो कनेक्शन है ना, इट सिंबलाइजेस के ह्यूमन एंड जो गॉड के बीच में जो कनेक्शन है ना उसको दिखाने के लिए कंप्लीट फेस्टिवल वही मनाते हैं. उनका कपड़ा, उनका गेटअप, उनका डांस और उनका जो सजावट रहता है, एनवायरमेंट सजावट आसपास का, तो वो टोटली डिफरेंट रहता है. अगर आप सर्च करोगे इट इज ऑलरेडी वायरल ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, क्योंकि ये सब थोड़ा बहुत किसी को वीडियो मिल गया था एंड दे मेड इट वायरल फॉर श्योर. अभी मार्च में होने वाला जब विंटर खत्म होगा तभी जाके मनाएंगे बिकॉज दे आर थैंकिंग द गॉड, क्योंकि उनको उनकी जो हार्वेस्ट है, उनकी तबीयत और उनका जो पूरा गांव और सब कुछ ठंड के टाइम में बचाने के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए ये फेस्टिवल मनाते हैं. सो दिस इज द होल समरी अबाउट दिस फेस्टिवल. आई होप आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा. अगर पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना. और हमारे साथ जो जो बने हुए हैं तब से प्लीज़ कमेंट करके बताइए कौन है हमारे साथ जो चुप है बट है बहुत बहुत शांत बैठे हुए हैं. आई वॉन्ट टू नो के हमारे साथ कौन कौन थे जुड़े हुए थे. एंड चुप मत रहिए यार, कमेंट कीजिए समथिंग, से हाय, से हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट्सअप. कोई है, कोई है, कोई है. हेलो, हाय गाइस, व्हाट्सअप. हेलो, हेलो, व्हाट्सअप गाइस, कौन कौन है हमारे साथ. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस गाइस. हेलो, मैं नो हु इज देयर. कौन हमें देख रहे हैं और चुप क्यों है, प्लीज कमेंट करके बताइए थोड़ा. हेलो.
Okay. Hello, hi guys. Hello. Hello, hi guys. Namaste, Ram Ram, Radhe Radhe, Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum. Thank you for joining us today guys. आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल का जो फेस्टिवल है लॉरेन फेस्टिवल, तो उसके ऊपर बातें कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें। और कौन कौन ये फेस्टिवल के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपने कभी सुना है। आई थिंक फेसबुक इंस्टाग्राम में बहुत वायरल है ये फेस्टिवल, तो अगर आपने सुना है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। हेलो, हाय, व्हाट्सअप गाइस, कोई है जो जानता है फेस्टिवल के बारे में, या आपने इंटरनेट में देखा हो, कोई पिक्चर्स देखे हो, कोई वीडियो देखा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। एंड जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, एंड डेफिनेटली अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा लाइव स्ट्रीमिंग तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। हेलो, हेलो गाइस, हेलो। हेलो, नमस्ते, कैसे आप लोग? कमेंट तो करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? व्हाट यू आर डूइंग गाइस? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? 12:40 में सन्नाटा ही सन्नाटा है। कोई बात नहीं, कर लो एज यू विश। हेलो, व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? नमस्ते, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? व्हाट्सअप। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल का लॉरेन फेस्टिवल के बारे में। अगर आपने सुना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और रुरलैन रुरान रुरान रोलन रोलन रोलन।
ओके, हेलो। तो चलिए, आई थिंक हम लोग फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और ध्यान रखिए अपना। ओके, जो जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उन सभी को थैंक यू। बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। आई होप आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए होंगे, एंड प्लीज़ री वॉच अगर आप